ठीक है। हाँ अरे हो ही नहीं रहा, कोई प्लान नहीं चल रहा। I just want to say everybody to keep your background sound turned off and your speaker microphone muted so that there should be no disturbance in the हो ही class. नहीं रहा, कोई चल। Yeah, now we are live in Zoom. So Zoom users can Zoom YouTube. So YouTube users can also watch our video. The certificate will be only provided in our, to our participant who have paid the fees, and interactive session is only for our participant, not for the YouTube users. Before to start, EcoSkill Arts is basically a program run by Shishti. Shishti is a community building program in arts and science. They have a big network. They have big network in community building in Kolkata. They have in Pune, Mumbai, Ahmedabad, and other 4 nations. So, EcoSkill Arts is basically a registered NGO under Society Act 1998. They are also registered in the Niti Aayog, and they are the Industrial Associates of Skill Council of Green Jobs. They have also worked with Ministry of Forest and Environment and COP19. So it's our privilege to work with Shishti. EcoSkill Arts is a program run by Shishti. We deals with 3 important things, that is learning, sharing, and recording. So we never put ourselves back in these 3 things. Another thing we used to follow, that is Guru Shishya Parampara. Once you are our partner or our participants, we will not link you to go out. That means if you have any type of problem in any kind of course, we are here to help you all. It's no matter you are here for 1 day or 2 days. After 6 months also, if you feel there is some problem, for example, you are here for movie making, and if you feel if there is some problem in movie making after 6 months, we are here to help you. We can use AnyDesk or TeamViewer to come live in your screen and guide you. So thank you all. Before not much wasting time, so we are here to start our session on movie making through mobile or a professional DSLR cameras with a simple and sober settings, so that we can easily create our photo, capture our videos, make documentaries, promote our concepts, because concept building is a much important thing in movie making and for promoting yourself, whether you are a teacher, whether you are a student, whether you are a professional. Everybody has brain and everybody continuously thinking one after the another. So these things can be brought together and simultaneously broadcasted in number of social medias like in Instagram, like YouTube, like Facebook, and you can promote yourself. So here we have Mr. Yatish Jainji, who has 10 years experience in EDTV, and he's a broadcasting expert. He's also an expert of marketing integration and digital integrations. So he will guide you throughout this chapter of movie making. 4 hours course, today 2 hours and tomorrow 2 hours, same time, same location, online with same link. Thank you all guys. So let's start. Yatish ji, over to you. हेलो एवरीबॉडी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, Yes, sir. हाँ,
आप में से अभी तक किन किन लोगों ने मूवी मेकिंग पे कुछ काम किया है या फोटोग्राफी पे? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं उसी टाइप से आपका जो लेवल है उसी हिसाब से फिर आपको गाइड करूंगा. Sir, sorry to interrupt you, but we have small student, a nice small student. There is you can see one ID, Annapurna ID. So Aditya joined. I am also Aditya. He is also Aditya. So Aditya has joined us. He is from class 7th, I think. Okay. You can unmute your Sir, I'm in class 5th. class 5th. So Okay. this is the youngest chap we have to Okay. understand about movie making. And this honorable Professor A.H. Reddy. Reddy sir, you can unmute yourself and give your introduction, sir. Hello, sir. Hello. Good afternoon. I'm Nath Reddy. I'm working in one of the engineering colleges. So I am interested in this topic, and luckily I got this link through Srishti. So I would like to know and learn about this. Thank you for being making me here. Okay. Sir, it's our honor, sir. You are here, and we are here along with you. So it's our honor, sir. It's our pleasure, sir. And we have another candidate, Digant Shukla. I did some wildlife photography earlier. Yes, sir. I did some wildlife photography earlier when I was doing some PhD work. Apart from that, I don't have any experience. That time we used Nikon F10 camera. It was not a digital one. Sir, it will be great news if you share, if you feel time, and if you feel comfortable to share your photographs with us. Right now, I don't have because it was long back. Maybe No 15 problem, years sir. back. No issues, sir. No issues. We have another chap, Digant Shukla. Namaste, Digant Shukla ji. You can unmute yourself and give your introduction. And have you gone through some video making or movie making earlier? सर प्रोफेशनली नहीं ट्राई किया है बट मूव किया है 2-3 बार. Oh, very good, very good. But that means you're familiar with all those features. And there is a little chap, Aditya, he might be Yes, sir. using Mama's iPad or mobile phone to Actually, sir, it's my iPad, but the ID is not your mine. iPad. That's a great news that you have iPad in class 5. In class 5, we don't have even mobile. We used to call through landline phone. Hello, hello, tring, tring. It's a nice time. Okay, thank you. Thank you all. Let's begin today's journey. ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं और हम ज़्यादातर फोकस अभी आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. ज़्यादातर लोगों पे मोबाइल फ़ोन तो है ही. तो आप चाहे मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफी करें या डीएसएलआर से करें या वीडियो कैमरा से करें, जो बेसिक सेंस होता है फोटोग्राफी का वो कॉमन ही होता है. तो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं इन द सेंस ऑफ क्रिएटिविटी. टेक्निकली चीज़ें डिफरेंट होती हैं. तो मैं स्टार्ट करूंगा ये कोर्स. पहले आपको टेक्निकल डिटेल में भी थोड़ा बताऊंगा मैं कि फोटोग्राफी टर्म्स क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे अपर्चर हुआ, आईएसओ हुआ, और भी टेक्निकल टर्म्स हैं जो फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं. उनकी भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कभी आप एडवांस फोटोग्राफी या एडिटिंग वगैरह करते हैं तो आपको हेल्प करेगा. तो क्योंकि ये छोटा कोर्स है तो हम थोड़ा फास्ट ट्रैक से इसको करेंगे. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. तो मैं सबसे पहले फोटोग्राफी के बारे में आपको एक वीडियो दिखाता हूँ. टेक्निकल फोटोग्राफी टर्म्स. तो If you're just starting out in photography, it can be confusing when photographers use terms you do not understand. Here are the explanations between 25 technical photography terms that will give you essential foundational knowledge of photography. Let's start with the 3 pillars of photography: aperture, shutter speed, and ISO. Aperture is defined as the diameter of the entrance pupil of the lens through which light travels into the camera. A larger aperture or larger opening lets more light into the camera, and a smaller aperture or smaller opening
lets less light into the camera. Think of water flowing through a garden hose into a well. The width of the hose represents the lens's aperture, the water, light, and the well a pixel on the camera sensor. In photography, the focal ratio is a measurement of the size of the aperture, but it is often found abbreviated as f-number, f-ratio, or f-stop. Make sure you do not confuse focal ratio with focal length, which, measured in millimeters, affects how zoomed in your lens will be. For a more detailed explanation, click the card above. Higher focal ratios represent smaller aperture sizes, and smaller focal ratios represent larger aperture sizes. Changing f-stop also affects depth of field. Depth of field is the distance in images in focus from front to back. A shallow depth of field caused by decreasing the f-number means less of the image will be in focus, resulting in a background blur. Creating this background blur is a neat effect often used in portraits to eliminate distracting backgrounds, and the rendering quality of out-of-focus areas is referred to as bokeh. When two lenses with the same focal length and aperture are said to have differing bokeh, it means that while each lens produces the same amount of out-of-focus blur, one lens may do so with a more pleasing effect. A deep depth of field resulting from increasing f-number means more of the image will be in focus, and is often used in landscapes. Two lenses set to the same f-stop may not transmit the same amount of light to the sensor, however. This is where t-stops become useful. T-stops measure the amount of light transmitted through the lens into the camera. T-stops are often used in place of f-stops to characterize cinema lenses, since matching exposure is important when producing a film. Due to the optical nature of lens elements, no lens has 100% transmission, and some lenses have significantly less. If you're buying a lens for its light gathering ability, check the t-stop value to ensure you're making the best choice. Shutter speed is the length of time the shutter is opened, exposing the sensor to light. Extending the garden hose analogy, Sir, your microphone is muted, sir. तो ये अपर्चर होता है, ये हमारे मोबाइल कैमरे में भी होता है और डीएसएलआर में भी होता है, वीडियो कैमरे में भी होता है, पर जितने भी ये हमारे मोबाइल कैमरे आ रहे हैं इसमें फिक्स होता है। तभी इन्होंने अलग-अलग टाइप के कैमरे फ़ोन में कैमरास बनाए हुए हैं। एक्सपेंसिव कैमरा में 3-3 कैमरा आ रहे हैं, तो उनमें सब में इन्होंने अलग-अलग कैमरा में अलग-अलग अपर्चर सेट किया हुआ है और लेंस जो उसका एमएम है वो अलग-अलग सेट किया हुआ है। तो ये दोनों ही कैमरों में होते हैं, प्रोफेशनल कैमरे में और मोबाइल कैमरे में भी। प्रोफेशनल कैमरे में हम इसको कम ज़्यादा अपना कंट्रोल उसमें काफ़ी होता है हमारे हाथ में, मोबाइल कैमरे में इसका कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं होता। the shutter speed would represent the duration from the moment the spigot is turned on to the moment it is turned off. Longer shutter speeds result in more water in the well, increasing the amount of light the sensor is exposed to, and shorter shutter speeds have the opposite effect. Leaving the spigot open too long causes the well to overflow, and water spilling out represents data that is lost from blown highlights. These two pillars affect camera exposure. Exposure is defined as the amount of light per unit area reaching the camera sensor. Shutter speed and aperture affect camera exposure because they physically control the amount of light reaching the sensor. You may also hear exposure relating to a single shutter cycle. For example, a long exposure signifies a shutter open for long periods to capture enough light. You may have also heard of the exposure triangle. The exposure triangle is a relationship between aperture, shutter speed, and ISO. Even though this is the largely accepted version of the exposure triangle, since aperture and shutter speed are the only parameters affecting exposure, we need to rethink how ISO relates to these two variables, a thought we will come back to later in this video. Let's rename the shutter speed aperture ISO triangle the camera settings triangle to align with the definition of exposure. The third pillar of photography is ISO. ISO is an abbreviation for the International Organization for Standardization, which, just like it sounds, is an organization that develops and publishes international standards. In the world of photography, ISO is another way to describe the amplification of sensor data that occurs after an image is taken.
Referring to ISO as a sensitivity of the camera sensor or exposure is incorrect, since ISO does not affect how much light a camera can physically gather. Instead, ISO represents the relationship between exposure and image brightness. Brightness is the perceived lightness of an image, and its alteration involves the transformation or amplification of sensor data after light is gathered. Raising ISO is principally the same as adjusting the exposure slider in Lightroom. The image is brightened and previously recorded signal is amplified. ISO connects brightness and exposure, in that setting a low ISO, let's say ISO 100, with the objective of producing an adequately bright image, requires a large exposure, while setting a high ISO, such as ISO 1600, with the same objective, requires a small exposure. Both images may look the same, but up close the ISO 1600 image appears to have more noise, random variations in color and brightness information in an image. This is because of a difference in the signal-to-noise ratio. Signal-to-noise ratio in photography is the ratio of light to noise in a digital image. If an image has a high signal-to-noise ratio, information clearly stands out against background noise, whereas an image with a low signal-to-noise ratio will contain information barely recognizable from background noise. Digital noise comes from a variety of sources, from light itself to electronic interference from inside the camera. Less light means less signal, and a lower signal-to-noise ratio. Referring to the two photos I took at varying ISOs, because the ISO 1600 image received 16 times less light than the ISO 100 image, its signal-to-noise ratio is greatly reduced, and more noise is visible throughout. Keeping exposure constant and adjusting ISO, you can see that when equalizing brightness in Lightroom, noise levels are nearly identical. This proves that adjusting ISO merely amplifies signal and doesn't introduce noise into the image on its own. Why is this important to know? With an understanding of light as signal and lack of signal as noise, you can begin to record exposures with the goal to optimize SNR, a method often referred to as exposed to the right. Remembering the garden hose analogy from earlier, thinking of each photo site on our sensor as a tiny well, not all the wells will fill at the same rate, because highlight areas will possess a higher level of signal than shadows, meaning that given the same exposure settings, shadow wells will contain less water than highlight wells. Since a well completely full of water represents an optimal SNR, if we try to increase exposure to fill up the shadow wells more, our highlight wells will overflow. In photography, this manifests as blown highlights, and clipped signal is much harder to recover than weak signal. So our goal when selecting shutter speed and aperture is to meter for the brightest highlights so that no signal is lost. Or, if the brightest highlights are unrealistic to expose for, like when shooting into the sun, we can let a select number of the brightest wells overflow. If certain shadow regions do not contain enough signal to be brightened after the fact, then bracketing exposures for high dynamic range, or HDR, and combining them with special software will give a picture with optimal SNR for all regions of the image. All the wells will be full. Now that we have covered the scientific principles behind photography, let's discuss key camera settings that you can use to get the most out of your photos. Before you even take a photo, make sure your camera is set to RAW picture mode instead of the default JPEG file format. RAW files take data right off the sensor and store it in a lossless format, making it easier to edit in post-production. Post-production refers to the editing of an image after it has been taken. Editing software like Adobe Camera Raw, Photoshop, and Lightroom allow for manipulation of raw data to create the desired end product. When shooting JPEG, raw sensor data is processed in camera, often with sharpening, saturation, and contrast presets. These files are hard to edit since much of the raw information has been destroyed to decrease file size. Since the photographer has no control over depth of field or motion blur. But if you're a beginner, it can be helpful knowing how the camera adjusts to different lighting scenarios. Sir, I request you to just brief it out कि what have हाँ वही कर रहा हूँ मैं. जी जी
बेसिकली हम जब मूवी मेकिंग शुरू कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा नॉलेज लाइट के बारे में होना चाहिए। जैसा कि वर्ड है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? फोटो मतलब लाइट और ग्राफी मतलब लाइटिंग। तो जो भी फोटोग्राफी होती है, चाहे मोबाइल में हो चाहे दूसरे कैमरास में, वो लाइट के थ्रू होती है। तो सारा गेम फोटोग्राफी में लाइट का है। जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट करती है और उसका इमेज सेंसर के ऊपर बनता है, वो हमें दिखाई देता है। तो इस लाइट को 3 तरह से कंट्रोल किया जाता है। एक तो अपर्चर के थ्रू, जितना अपर्चर खुला होगा, जैसे इसमें साइज बताया, बड़ा होगा, उतनी लाइट उसके अंदर ज्यादा जाएगी। जितना उसका छेद छोटा होगा, अपर्चर टाइट होगा, साइज छोटा होगा। I think there might be some network issue. किसका? हेलो, सर आवाज आ आपका, रहा है? हाँ आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया था सर। अच्छा, नहीं अभी तो ठीक चल रहा है। चलिए ठीक है, ठीक। तो एक तो अपर्चर से लाइट कंट्रोल होता है, दूसरा स्पीड से। स्पीड कंट्रोल करता है कि अपर्चर से कितना लाइट कितना ड्यूरेशन के लिए अंदर गया। आपने देखा होगा कैमराज में लिखा होता है 1/25, 1/1000, 1/500। ये स्पीड होता है, यानी 1 सेकंड में शटर, जैसे 1/500 है तो 500 पार्ट में खुलता है, तो उतना लाइट जाएगा। और अपर्चर जितना साइज छोटा या बड़ा होगा उतना जाएगा। तीसरी चीज है आईएसओ। आईएसओ से भी लाइट कंट्रोल होता है, सेंसिटिविटी कंट्रोल होती है सेंसर की। जैसे लो लाइट होता है, कभी लाइट बहुत कम है, तो हम आईएसओ को बढ़ा के, सेंसर की सेंसिटिविटी बढ़ा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, इसको थोड़ा सा जानना इसलिए जरूरी है कि आप कभी कोई ट्यूटोरियल या वीडियो देखें तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। बाकी मोबाइल कैमरे में ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है, कंट्रोल कम होता है। प्रोफेशनल कैमरे में इसके कंट्रोल ज्यादा दिए होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अपर्चर, आपने बहुत सी इमेजेस देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि वो इमेज का बैकग्राउंड ब्लर होता है और आगे का ऑब्जेक्ट शार्प होता है। किसी किसी में बैकग्राउंड भी शार्प होता है और आगे का आगे का ऑब्जेक्ट भी शार्प होता है। ये कैसे होता है? ये कंट्रोल होता है अपर्चर से। तो हम देखेंगे इसके बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो। Most influential parameter of photography, aperture plays an important role in composition and setting up a shot. Let's take a closer look. Simply put, aperture is the hole in the lens through which light travels into the camera body and onto the camera sensor. To understand, let's look at the human eye. All cameras are designed like human eyes. The cornea of our eye is similar to the front element of the lens, gathering light and bending it inward toward the iris. The iris can expand or shrink, controlling the size of the pupil, which passes light into the inner eye. The pupil is what we refer to as the aperture in photography. The amount of light that falls onto the retina is determined by the size of the pupil. The larger the pupil, the more light falls onto the retina. The larger the aperture of the lens, the more light enters the camera. The iris of the lens controls the size of the aperture and is called the diaphragm. The diaphragm's function is to block all light with the exception of the light that goes through the aperture. In photography, aperture is expressed in f numbers, also known as f-stops. F-stops are a way of describing how open or closed the aperture is. The smaller the f-stop means a larger aperture, while a larger f-stop means a smaller aperture. This can be tricky to remember since large f-stops mean small aperture sizes. So an f-stop of f1.4 is larger than f2.8 and much larger than f8 or f11. Aside from controlling the amount of light passing through the lens and into the camera, the aperture has a direct impact on the depth of field, the area of the image that appears sharp. A large f number such as f16 will bring all foreground and background objects into focus, while a small f number such as f1.4 will isolate either the foreground or background objects and make everything else blurry. Every lens has a limit on how large or small the aperture can get.
If you take a look at the specifications of your lens, it should indicate the maximum apertures, lowest f numbers, and minimum apertures, highest f numbers. Every aspect of the camera. Sir, there is some problem. It's freezed and your audio is not there. हेलो, Yeah, now it's okay. थोड़ा नेट का इशू हो रहा है शायद। तो अभी जितने भी कैमरे आ रहे हैं, प्रोफेशनल कैमरे में तो आप एक एक पॉइंट को आराम से कंट्रोल कर सकते हो, पर जो आजकल मोबाइल कैमरे आ रहे हैं उसमें भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। मल्टीपल कैमरा का जो मोबाइल्स आ रहे हैं, आप उनकी सेटिंग में जाओगे तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत से मोबाइल्स में होता है पोर्ट्रेट मोड है, लॉन्ग शॉट है, इसके अलग अलग प्रीसेट बने होते हैं। उसको इसी से अपर्चर से और स्पीड से कंट्रोल किया होता है, तो उसमें आप सेटिंग्स में जाके उसको चेक कर सकते हो आप। तो अभी हम आगे चलते हैं और अब हम लोग जो मूवी मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं, बेसिक तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा ये। तो मूवी बनाने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपको बनाना क्या है। सबसे पहले आपको एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना होगा, मतलब किस टॉपिक पे आप क्या बना रहे हो। आज आप यूट्यूब पे भी देखते होगे, छोटे छोटे प्रोग्राम के वीडियो बनाए हुए होते हैं, किसी ने कोई भी टॉपिक पे बनाया हुआ होता है, या फिर किसी ने अपना यूट्यूब चैनल खोला होता है। तो यूट्यूब चैनल भी आज आप मोबाइल कैमरे से भी बना सकते हो, प्रोफेशनल कैमरे से भी बना सकते हो। पर अगर आपको कोई स्टोरी बनाना है या किसी के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो आपको थोड़ा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या क्या सीन दिखाना है और किस तरह से बनाना है। अगर आप सीधा सीधा कैमरा लेके उसको मूव करके मूवी बनाएंगे तो वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगेगा। पर अगर किसी सीन को प्रोफेशनली दिखाना है तो उसमें हमें डिफरेंट एंगल लेने होते हैं। किसी भी स्टोरी को कहने के लिए, एक ही पार्ट को कहने के लिए मल्टीपल कैमरा एंगल यूज किए जाते हैं। तो अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे कि ये कितने टाइप के एंगल होते हैं, क्योंकि जब आप आज तो हम सिर्फ फोटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, कल एडिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनली मूवी बनेगी कैसे। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आज आप कैमरा एंगल और ये स्टडी करें और शूट करके रखें। कल का दिन आपको मिलेगा तो आप डिफरेंट एंगल से मूवी शूट करें और फिर कल हम उसको असेंबल करेंगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो कैमरे में कैसे कैसे एंगल होते हैं अभी हम उसको देखेंगे। Hey, how's it going? Parker Welbeck here with FullTimeFilmmaker.com, and today I'm joined by one of our team members, Jake Weisler, and in this video we're going to be sharing with you our 12 different camera angles that you'd want to use to enhance your films and help bring more emotion to your stories. One of the biggest questions I get asked is which camera angle should I use and when? So we're looking to answer that question today. But first, let's answer the why. Why are camera angles important? A few reasons. Number one being perspective. By shooting from different angles, you can give your audience multiple perspectives of what they're looking at to help them understand the scene and feel more connected to it. Number two, emotion. Different camera angles can help you convey different emotions, as we'll talk about more in just a moment. And number three, editing. Editing your video becomes a lot easier when you have multiple angles to choose from, which will ultimately help you tell a better story. Now that you understand the why, let's talk about what are the 12 most popular camera angles you'll see in everyday films and when you'd want to use them. You have your wide shot, your long shot, your medium shot, the cowboy shot, a tight or close-up shot, a detail or extreme close-up shot, a low angle, a high angle, a Dutch angle, an over the shoulder, a POV shot, and a cutaway shot. A wide shot is usually captured on a wider angle lens so as to see more of your surroundings and is more frequently used when you're wanting to establish a location so the viewer can understand where the scene is taking place. Wide shots can also be used to portray emotion like loneliness, insignificance, or feelings of being removed from the action. A long shot is also used to establish location, but with a bigger emphasis on your subject filling the entire frame, usually showing their full body. This look is best created
good using a tighter focal length and shooting from a distance. A medium shot is usually from the waist up and is used to help the viewer focus in on what your subject is doing or saying. This shot is also great for helping the viewer feel as if they are close to the subject, because a medium shot most closely represents the distance you view people from as you're having a conversation with them. A cowboy shot is in between a long and a medium shot, framed from the mid-thigh up, called so because of its popular use in Western films. This would be used instead of a medium shot if you need to show detail around the waist like a freaking gun. A tight shot is often just the head and shoulders of your subject, used mainly for dialogue or to show the detailed expression of your subject. Tighter shots are usually used for important or intense or intimate pieces of dialogue or action to help the viewer know that they should really pay attention to what's being said. And tight shots are typically best shot on tighter focal lengths, like around 50 to 100 millimeter. A detail or extreme close-up shot is used to put emphasis or importance on a specific detail in your image. Detail shots are a great way to create mystery and depth in a story, to help draw the viewer's attention to the common theme. And again, detail shots are typically best shot on tighter focal lengths like 50 to 100 millimeters or macro lenses. A low camera angle is used to make your subject appear larger than life and to portray power and dominance. Low camera angles can also be made to portray wonder and majesty as long as your subject is smaller than what surrounds them in your image. A high camera angle does the exact opposite by portraying your subject as weak and inferior or smaller and vulnerable. Now, a Dutch angle is basically any time you slightly tilt the horizon of your frame and is usually used to convey an uneasy emotion like something isn't quite right, basically giving the feeling like the world is on its side. Dutch angles can be artfully utilized to tell us that something is wrong. Over-the-shoulder shots are exactly how they sound. When you have two subjects talking to one another, you put the camera behind the shoulder of one of the two, placing one in the foreground, giving the perspective as if you are the person that is being talked to. A POV or point of view shot depicts an angle that shows what a character is looking at. This type of shot allows the viewer to take on the perspective of the character and begin to understand their state of mind on a more personal level. This is commonly used in action or sports scenes to help give the audience the thrill of being in the driver's seat, and is usually shot on a wide angle lens so that you can see more of your surroundings. A cutaway shot is an interruption of a continuously filmed scene by inserting a view of something completely different. Cutaways are great to help transition to new scenes or to show side stories happening at the same time as your main story. So there you have a quick look at the 12 most popular camera angles. Let's now give you some examples of how we apply each of these angles into different styles of films. In our first example, we're going to show you a scene shot from all 12 camera angles we just mentioned to show you how much more life it brings to your film when you utilize camera angles. Check it out. gotta be kidding me! As you can see, by adding multiple camera angles, it creates a variety of perspectives, adds more emotion of intensity, and it helps the editor more easily piece together a compelling story. Now, of course, we also added slow motion, sound effects, sound design, a letterbox, a color grade, and so on. But camera angles were a huge part of making this sequence more cinematic. Be careful though, adding more camera angles isn't always better. Before you start shooting extra camera angles for your scene, first ask yourself, does this angle add or take away from the story and emotion I'm trying to convey? Let's look at a second example where multiple camera angles would actually distract from the story rather than add to it. In this scene, let's say we're trying to portray an emotion of loneliness and mediocrity. Here's our first attempt at this scene, filmed with multiple camera angles. Check it out. Okay, so how did we feel? It was busy, right? Like our subject was in a rush or he was late. Definitely did not convey an emotion of loneliness because the camera was accompanying him the whole time. Let's try again using just one camera angle. Check it out.
that तो felt आप देखेंगे एक ही एक्शन को इन्होंने पहले एक ही कैमरा एंगल से शूट किया है और फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल से शूट किया है। तो आपकी मूवी तभी प्रोफेशनल लगेगी जब आप कैमरा एंगल को मल्टीपल कैमरा एंगल लेके उसको कंपाइल करेंगे, शॉट्स बनाएंगे। इसका एक बेटर तरीका होता है कि जब आप कोई मूवी शूट कर रहे हो तो सबसे पहले एक पेपर पे आप उसका एक स्टोरी बोर्ड बना लें कि अगर वो कमरे से बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, रोड पे जा रहा है, तो आप कितने शॉट उसके लेंगे। अगर आप पहले से इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो शूटिंग के टाइम आपको बहुत इजी होगा। तो जनरली जब आप स्टोरी लिखेंगे, कोई भी स्टोरी छोटा मोटा, तो उसमें सीन वाइज पहले उसको डिवाइड करेंगे कि मेरा पहला शॉट कमरे के अंदर है, दूसरा कमरे के बाहर है या रोड पे है, या जो भी आप अपनी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। तो हर सीन के ऊपर आप कितने तरह से उसको दिखाएंगे। जैसे ये सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहा है तो इसने क्या दिखाया है कि उसके पैर दिखाए हैं, उसका प्रोफाइल दिखाया है, क्लोजअप दिखाया है, फिर लॉन्ग शॉट दिखाया है। तो उसने मल्टीपल कैमरा एंगल यूज करे हैं जिसकी वजह से वो प्रोफेशनली दिख रहा है। एडिटिंग में उसको जाके जोड़ दिया। तो इस तरह आप भी जब भी कोई स्टोरी बनाएंगे, चाहे घर के अंदर की बनाएंगे या बाहर की बनाएंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कैमरा को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में या एक ही एंगल पे नहीं रखना है, उसको मल्टीपल एंगल बना के उसको यूज करना है और उसको हम फिर एडिटिंग में जाके सारे शॉट्स को जोड़ेंगे। a lot more lonely, didn't it? The frame was completely empty except for our main subject, thus portraying that he was all alone in a big, lonely world. And I see this mistake a lot in amateur films. People filming close-up detail shots of things that aren't important and not adding anything to the story. Why would you film a close-up shot of his watch or shoes unless he's looking at his watch to show that he's late for something, or showing that his shoes are untied, which would eventually lead to him tripping and causing drama in that scene? If those detail shots are irrelevant to the scene, which is just him walking all alone down a street, then it will confuse your audience because they'll be thinking, wait, why did they cut to a close-up of his shoes? Was there a detail on the shoes that I was supposed to catch? Was there something important on his shoe? Why did they go to a close-up there? So don't add angles unnecessarily unless it's adding to your story and the emotion you're trying to convey. Now, one thing to be aware of when filming multiple camera angles is something they teach in film school called the 180-degree rule. The 180-degree rule is basically an invisible line that you draw in the middle of your scene, and you have to make sure not to cross over the other side of that line as you are going from camera angle to camera angle. For example, in this scene, we have dialogue happening between two people. Subject 1 is on the left side of the frame and subject 2 is on the right side of the frame. Using the 180-degree rule, we want to keep both subjects on their own side of the frame so that it's evident that they're talking to one another as you cut back and forth between them. If you were to cross over that line for one of the angles, they'd both be on the same side of the frame, making it hard for the viewer to know where each of these subjects are in relation to the other. The only time it's really acceptable to cross the 180-degree line is if you do a continuous shot moving across that line with one camera movement. But when cutting between two shots, make sure to stay on one side of that invisible line. There's also times where the 180 rule is less applicable, like when you're filming a montage of an event like a concert or a wedding venue, where you usually just want to capture the event from every angle possible. But even then, keep the 180 rule in mind in the editing room to make sure your cuts flow together smoothly and seamlessly without confusing the audience. Which reminds me of another rule to keep in mind when editing camera angles called the 30-degree rule, which basically states that when cutting between two angles of the same subject, like an interview of someone talking, you want to make sure that camera angle A and camera angle B are at least 30 degrees apart. And ideally, they'd also be a different type of angle, like cutting from a medium shot straight in front of the subject to a tight shot. By keeping this in mind, it will help your angles cut together more seamlessly and professionally. Now, a question I get a lot at this point is how many camera angles should I shoot per scene? Like we've talked about, it depends on your story. But when covering an important piece of action, I typically like to cover at least 5 different angles. For example, here's a music video that I shot for a local band, Foreign Figures. I started the video with a wide establishing shot to show off the whole location. Then I cut to some tight shots of different band members' faces and instruments. I also mixed in some medium shots of the waist up and some long full body shots here and there, and occasionally an extreme close-up to show off some specific details. I even did some drone shots to give a high angle for a new perspective and some low angles up against the water for another perspective. And I did about 20 total takes
on this shoot, but made sure to cover those 20 takes from a variety of camera angles so that I had freedom and flexibility in the editing room to cut between those different angles to give the viewer a much more dynamic viewing experience and immerse them into the video. So there you have it, guys. That's it for camera angles. Hopefully those tips were helpful. If you'd like to learn more filmmaking tips, तो आपने देखा कि अगर हम डिफरेंट एंगल से शूट करते हैं किसी भी एक सीन को तो कितना प्रोफेशनली दिखता है, और अगर एक एंगल से आप शूट करोगे तो कैसा दिखता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे कि हम अपने फ्रेम को और कंपोजिशन को कैसे बनाएंगे। आपने स्टोरी बना ली, अपनी सीन बना लिया, पर अब सीन के अंदर आप कंपोजिशन कैसे बनाएंगे अपने कैमरे से, वो देखते हैं। So, how do you frame your shot so that it looks interesting? How do you take better photos to tell better stories? Well, in this video, I'm going to show you 4 framing and composition techniques that will instantly help you improve. It's coming up. Hey everyone, Steve here from Learn Online Video, helping you master the art of online video production. And today we're talking framing and composition. And look, if you're new to framing and composition and you aren't using any of these techniques yet, then by the end of this video, you're going to have all the knowledge that you need to start taking better photos and shooting better videos. And the best part about framing and composition is that it's completely free. Normally when we talk about improving our videos or our photos, it involves spending money. Get a better camera, get this piece of software, get this camera accessory. With framing and composition, it's completely free. You just need the knowledge. So today we're going to cover 4 techniques that anyone can do. The rule of thirds, leading lines, symmetry, and framing within your frame. So look, let's simplify all of this, okay? Let's bring this down to basics so that you have a really good understanding of when, why, and where you might use some of these techniques. This is framing and composition 101. Now let's pretend for a second you were given a brief, and your brief was to capture an opening shot of this lighthouse. How would you capture it? Well, let's run through each of these 4 framing techniques and apply them to this lighthouse to see what difference it makes. Okay, so let's talk the rule of thirds. Now, the first thing that you should do is enable the grids on your camera. They look a little something like this. Now, you may have seen these grids on your camera before and switched them off because you thought that they were distracting, but if you're new to framing and composition, I encourage you to keep these switched on. Now, the grid is made up of 2 vertical lines and 2 horizontal lines, all spaced evenly apart. Now, when we place our subjects or focal points on these lines, particularly where they meet, a much more aesthetically pleasing shot is created, and our eyes are drawn to these focal points. It also helps balance a shot and gives it more context. So let's place our lighthouse to the right of our frame and place it directly on the intersecting points of this grid. This then leaves space to the left of our frame where we can fill it with something to help us tell a better story. In this case, we have the sea, some grass, and this helps give the audience a better understanding of where the lighthouse is located. Now, when shooting horizons, don't put your horizon in the middle of the frame. Try and put it on either the top or the bottom horizontal line. This allows you to make a feature of either the sky or the landscape and makes for a much more pleasing shot. Now, I've made a whole video on the rule of thirds. I will link it in the cards and put it in the description of this video. Be sure to check that out. Now, the rule of thirds technique is commonly used in interview situations. You may have noticed this when someone's being interviewed, the idea being that you give your subject some looking room, so either put them to the left or to the right of frame. Okay, the next technique is leading lines, and the idea here is really simple, okay? Use elements within your environment to create a visual pathway to your subject or focal point. So take this shot of the lighthouse here, for example. I've used this pathway to help draw the eye to my focal point. These don't need to be straight lines, they can be curved lines. Regardless of your location, look for elements within your environment that will help draw the eye to your focal point. I've also made an entire video on leading lines. I will put that in the description below. Here are some other shots I took of the lighthouse using the leading lines technique. This technique also works great for portrait shots. Just frame your subject so that lines within your environment help lead the eye.
Okay, let's talk symmetry. Now this technique is fairly self-explanatory. We're going to frame our shot so that it's nice and balanced with our subject in the middle of the frame. As you can see here, the lighthouse is nicely centered with the flagpoles either side. Another example of this would be a documentary style film where someone is talking directly to the camera. If your subject is talking to camera, frame them in the center of the shot. And notice here, we're also using some leading lines. For an absolute masterclass in symmetry, watch anything by director Wes Anderson. His films are full of beautiful symmetry and really make him stand out as a uniquely stylized filmmaker. Okay, framing within your frame. What does this mean? Well, again, look, let's use this lighthouse as an example. We're using elements within our environment to frame our focal point. A slightly more stylized approach, this one, a time and a place for it, and also it's a little harder to pull off because it requires having something within your environment that you're able to frame your focal point with. But when used correctly, it can really help your photos and videos stand out. So there you have it. Those were 4 framing and composition techniques to help you start shooting better videos and taking better photos. I hope you found this video useful. If you did, let me know by hitting the old thumbs up button. इस तरह से आप अपने फ्रेम को बनाएंगे। कोई भी सिचुएशन हो तो आप सबसे पहले फोरग्राउंड के साथ साथ बैकग्राउंड को भी स्टडी करेंगे। बैकग्राउंड में आप देखेंगे कहीं कहीं पे ये लाइंस होती है, पर्सपेक्टिव होता है, जैसे पिलर होते हैं, रेलिंग्स होती है या और भी चीज होते हैं, तो उनको इन रूल्स के थ्रू हमें कंपोज करना है और कोई भी चीज को पूरी तरह से सेंटर में नहीं रखना है। जिससे जैसे कि इस वीडियो में दिखाया है कि हमको थोड़ा रूल ऑफ थर्ड का ध्यान रखना है। रूल ऑफ थर्ड आप देखेंगे कि आप कोई भी मूवी देखेंगे, हॉलीवुड मूवी या इंडियन मूवी, जो अच्छी मूवी होती है, जिनकी फोटोग्राफी अच्छी होती है, तो आपको ये फ्रेम हर फिल्म में देखने को मिलेगा। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, इसमें एक मूवी का एग्जांपल देते हैं। So, how do you frame your shot so that it looks interesting? How do you take better photos? The old thumbs up button. And if you'd like to watch So, how do you frame your shot so that it looks interesting? Horizon is to encourage you to keep. In this video, I'll be telling you everything you need to know about the rule of thirds. This rule applies to filmmaking, photography, YouTube videos, and once understood will massively improve the composition of your shots. It's coming up. Yeah, thank you. There is one question. We have earlier seen 11 techniques how to shoot, and then we have seen 4 different techniques how to make a composition. So is there any relation between these 2 things? हेलो Hello? हाँ, आपका साउंड नहीं आ रहा है थोड़ा। Yeah, now is it audible? हाँ, अभी है। Yeah. So I just want to know कि before this video we have seen कि how there are 11 different techniques of making a composition, and now we have seen how to use grid lines and guidelines. So is there any relation between these 2 things? यस, बिल्कुल है रिलेशन। एक तो होता है जैसे आप कोई स्टोरी बना रहे हो तो वो मोनोटोनस ना लगे, तो उसके लिए आप डिफरेंट कैमरा एंगल लेते हो। कैमरा एंगल और फ्रेम का रिलेशन होता है, जरूर होता है, क्योंकि कैमरा एंगल से आप किसी भी सीन में कोई भी शॉट ले रहे हो, उसका एंगल बनाते हो और उस एंगल के अंदर फिर हम कंपोजिशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या क्या है। तो जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो इसमें जो लास्ट वीडियो दिखाया था, लाइंस है, पैटर्न्स है, जो भी बैकग्राउंड में इमेजेस है, उनको कंपोज करते हैं। और कैमरा एंगल में हम ये देखते हैं कि एक कहानी को कहने के लिए हम उसको कितने तरह से दिखा रहे हैं। जैसे कोई फ्रंट से बोल रहा है, बोलते बोलते अगर हम 1 मिनट तक ऐसी शॉट लेते रहेंगे तो आदमी लोग बोर हो जाएंगे, तो फिर हम उसका एक साइड एंगल लेते हैं, लॉन्ग शॉट लेते हैं, मिड शॉट लेते हैं, कभी कभी एक्सट्रीम क्लोजअप लेते हैं। पर जब हम ये एक्सट्रीम क्लोजअप
एक्सट्रीम क्लोजअप ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो उसमें तो हमें बैकग्राउंड इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, पर जैसे हम लॉन्ग शॉट लेते हैं या कुछ लेते हैं तो ये सारे पैटर्न्स दिखते हैं, बैकग्राउंड दिखता है, तो हमें उनको कंपोज करना होता है। क्लियर? Okay. Thank you, sir. Thank you. So, what is the rule of thirds? Well, in a nutshell, it is the composition of your shot or the framing of your shot and where within the frame your point of interest sits. The best and most simple way to understand the rule of thirds is with a grid like this. Now, you may have seen a grid like this on your camera before and switched it off because you thought it was distracting. कैमरेज में ये ग्रिड का फंक्शन होता है, इवन मोबाइल फोन में भी होता है, आप चेक करोगे तो ये आपको जब भी आप ऑन करके रखें स्क्रीन पे और जब भी शॉट लें तो इसके अकॉर्डिंगली लें। But if you're new to composition and you're just starting out, then I'd recommend keeping this grid switched on. The grid is made up of 2 vertical lines and 2 horizontal lines, all spaced evenly apart. Now, when we place our subjects on these lines, particularly where they meet, a much more aesthetically pleasing shot is created and our eyes are drawn to these focal points. It also helps balance a shot and gives it more context. To best demonstrate all of this, I've gathered some footage together. We're going to take a look at that now and we'll see how the rule of thirds has been applied. So this first shot, a nice simple one. It's of an interview, a sit-down interview for a promotional film. So as you can see, when we apply the grid, you'll see I've placed the subject, in this case Jade, on the cross-section of the vertical. आप देखेंगे ये जो शॉट लिया है ये सेंटर में नहीं है, तो इसने रूल ऑफ थर्ड अप्लाई किया है। रूल ऑफ थर्ड में ये जो 4 पॉइंट हैं जहाँ पे क्रॉस बन रहा है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करना है, मेन ऑब्जेक्ट को, या लेफ्ट में हो सकता है या राइट में हो सकता है। पीछे आप देखो इसने बैकग्राउंड को कितना नीटली अच्छी तरह से कंपोज किया है। तो ये अगर ग्रिड लाइन आपके कैमरे में ऑन रहेगी तो ये आपको हेल्प करेगी, नहीं तो आपको मैनुअली इमेजिन करना है कि ग्रिड कहाँ होगा और शॉट को उसी तरह से कंपोज करना है। अब ये चाहे क्लोजअप शॉट हो चाहे लॉन्ग शॉट हो, सभी में ये अप्लाई करेगा। And horizontal lines, because this is our focal point. This was a 2 shot, a close-up and a wide shot, but no matter which shot we cut to, you'll see. और ये क्लोजअप शॉट हो गया है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये सेंटर में नहीं है, इसने ग्रिड को यूज करके शॉट बनाया है। See that the rule of thirds has been applied. Now let's step things up a notch and head outside. So let's say we want to shoot some video or take a photograph of this lighthouse. We could place the lighthouse here, but it doesn't look particularly great. But if we move the camera and reposition the lighthouse here using the rule of thirds, you can see that our framing looks much better and we have a much more pleasing shot. If your shot has 2 subjects, then you can place them so that they appear on both of the vertical lines. So these have all been static shots. What happens when we want to add some movement? Here's some footage of a promotional film that I recently shot, and as you can see, when I add the grid, you'll notice that I'm placing my subjects using the rule of thirds. So the next time you're watching a film or a TV show, pay close attention to where the subjects are being placed within the frame, because you'll be surprised by just how often the rule of thirds is applied. Hollywood is using this technique, TV shows are using this technique, and so should you. But what happens if you've already taken your photograph or you've shot your footage and you haven't applied the rule of thirds? Well, don't worry, because it's not too late. Just import your footage into your editing software. In this case, I'm using Final Cut Pro, but all editing software will allow you to do this. We can then adjust the composition of our shot using the rule of thirds, and voila. So the next time you're about to take a photograph or shoot some video, take a moment just to think about your framing, your composition, your subject, and the rule of thirds. Now, this is a rule, and rules are there to be broken, but only break a rule that you understand. Think of it more as a handy rule of thumb rather than one that's set in stone. An exception to Sir, video freezed.
Hello. Hello. Yogi sir. There is some network issue. हेलो सर, उनकी वीडियो फ्रीज हो गई है. Yeah, there is some network issue. No issues. Along with us, we have. Yeah, he's back. Okay. Hello. Hello. हाँ, ये आ रहा है अभी? Audible. Yes sir, आ रही है आवाज. अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछना है कुछ? क्योंकि अभी आपको होमवर्क है, आज आप शूट करेंगे, आज है और कल दिन में, तो आपको ये सारी चीजें अप्लाई करना है. छोटा सा 1 या 2 मिनट का स्टोरी लिखना है कि आप क्या शूट कर रहे हो. चाहे वो घर के अंदर भी हो सकता है, पार्क में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है. पहले तो एंगल प्लान करना है. पहले तो आप स्टोरी लिखेंगे कि आप क्या बना रहे हो. उसके बाद उसको बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे कि इस वाले पार्ट में मैं क्या शूट करूंगा. जैसे मान लो आप घर के अंदर बना रहे हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, अब ज्यादा बाहर नहीं जा सकते. क्योंकि जो बाहर जा सकते तो पार्क वगैरह में जा सकते हैं. तो कोई स्टोरी क्रिएट करे, 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो इस तरह से स्टोरी बना सकते हैं. मैं आपको एक दिखाता हूँ. मैंने कॉलेज में बच्चों का एक क्लास था एडिटिंग का, मूवी मेकिंग का, तो उन्होंने 4 दिन के अंदर एक मूवी बनाई थी. तो वो मैं आपको एक दिखाता हूँ. इसमें हमारे पास कोई ज्यादा इक्विपमेंट नहीं थे, सिर्फ सिंगल कैमरा था, सिंगल ट्राइपॉड था. बहुत ही कम सामान के साथ हमने ये बनाया था. आप भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हो. FMG group of institutions was started in the year. सर ऑडियो नहीं आ रही है सर. Sir, audio is not coming. ऑडियो नहीं आ रहा है. FMG group of institutions was started in the year 2010, called FMG Academy, and was affiliated to the UP Technical University. In FMG, we are the best faculty who are teaching all the subjects, who have varied experience and are from best institutes in the country. The institute provides courses in design, fine art, management and IT. We also started the management courses at the undergrad. इसको हमने कैसे बनाया है? हमारे पास सिर्फ एक ही कैमरा है, एक ही माइक है, कैमरा माइक ही यूज किया है. आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी. तो हमें एक कॉलेज के बारे में दिखाना था, ये कॉलेज के बारे में. तो हमने एक स्टोरी क्रिएट की कि हम कॉलेज के बारे में बताएगा कौन, बोलेगा कौन. तो बोलेंगे वहाँ का जो
जो स्टाफ है या वहाँ के टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं जो क्लासेस लेते हैं वही ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। तो हमने पहले डिसाइड किया कि हम 4-5 टीचर्स से इसके बारे में पूछेंगे। तो एक स्टोरी बोर्ड बनाया कि हमको क्या-क्या इसमें डालना है। उसके बाद हमने इनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। अब आप देख रहे होंगे कि वॉइस इनका चल रहा है और पिक्चर फिर जिस बारे में बोल रहे हैं वो चल रहा है। तो जैसे ही हमने इनके इंटरव्यू ले लिया और इन्होंने जो बोला उसके अकॉर्डिंगली कॉलेज में हमने अलग-अलग रूम में, कॉलेज के बाहर, अंदर सब जगह शूट किया और फिर हमने उसको एडिट किया। तो ये जो बोलने के बीच में जो शॉट डालते हैं हम, वॉइस ओवर चलता है, उसको इंटरकट बोलते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें फिर हमने इंटरकट डाल के उसमें इसको शूट किया है। 10, and we had a fairly good batch of students who joined that year. At FMG, we are teaching a course, Bachelor of Fine Arts, in which we have 2 streams. One is about painting and another is applied art. Painting is like they will become more and more creative. They can understand the world, through their, eyes, and they can, correlate with their heart and brain this world. In applied art, we are teaching entertainment design, photography, and computer graphics, which is a very industry-centric program. And we are trying to make the students. इस साइड से लिया हुआ है। Very professional and technically equipped. FMC is providing 4-year fashion degree course. This course totally syllabized by the NIFT and IIT paper. We have prepared companies which are about to come to the institute to take up BBA students and MBA final year students, like Just Dance, Spice, Sabuna Securities. For finance students, we have media companies like NDTV, India Today, Zee News. They are going to take these students for their animation, graphic designing. सिंपल शॉट लिए हैं, मतलब सिर्फ हमने जो स्टोरी क्रिएट की है वो कॉलेज के लोगों से ही क्रिएट की है कि वो कॉलेज के बारे में बोल रहे हैं और डिफरेंट शॉट्स को लेके उसमें अरेंज किया है। आप लोग अपने स्कूल का, कॉलेज का इस तरह से मूवी बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो अभी जैसे लॉकडाउन है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपके घर के पास छोटा सा मार्केट होगा, आप मार्केट का बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप उसमें वॉइस ओवर डालें अभी लर्निंग फेज में। आप सिंपल कोलाज शॉट लेके क्लोजअप शॉट लिया है किसी का लॉन्ग शॉट लिया है, कहीं पैन शॉट ले रहे हैं कहीं, तो इस तरह से मल्टीपल शॉट लेके आप एक कोलाज भी बना सकते हैं, उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हैं, मार्केट का बोर्ड ले सकते हैं, मार्केट का नाम है या वो, इस तरह से बना के आप कुछ भी बना सकते हैं सीखने के पर्पज के लिए। तो आपके पास कल तक का टाइम है, आप कुछ शॉट लीजिए इनके। अब तीसरी चीज आती है कि हम गैजेट क्या क्या यूज कर सकते हैं, मतलब कितने टाइप से क्या क्या चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप मतलब कम बजट में भी अच्छी मूवी बनाना चाहते हो तो छोटे छोटे कई गियर होते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मोबाइल के लिए तो आप या तो आपने देखा होगा सेल्फी स्टिक होती है, उसको यूज कर सकते हैं। सेल्फी स्टिक से काफ़ी सारे एंगल बन सकते हैं। दूसरा मैं आपको एक प्रोफेशनल गियर दिखाता हूँ जिसका मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं गिम्बल। एक सेकंड, दिखाई दे रहा है सबको? ये गिम्बल है। इसके ऊपर हम यहाँ पे कैमरा लगा सकते हैं
इसका मैं अभी सर फोटो भी आपने जो दिखाऊंगा। पीछे वर्चुअल स्क्रीन रखी है वो उसके ऊपर आ रही है, वो दिख नहीं रहा है प्रॉपर्ली। उसको मैं हटाता हूँ। ये गिम्बल होता है, ये प्रोफेशनल गियर होता है। आप वैसे अगर कम बजट का बनाना चाहते हो तो आप सेल्फी स्टिक यूज कर सकते हो, और अगर आप प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हो तो गिम्बल होता है। इस पे यहाँ पे मोबाइल लग जाता है और इसमें काफी सारे कंट्रोल होते हैं, जूम इन जूम आउट का, और मोबाइल का काफी सारा कंट्रोल इनके बटन्स पे आ जाता है। तो आप इससे जो प्रोफेशनल बड़े जो DSLR कैमरा होते हैं उनके लिए भी फिल्म मेकिंग में भी इस तरह का गैजेट यूज होता है, वो बड़ा होता है। तो ये आपका मोबाइल का गियर होता है। दूसरा, आप कुछ भी साउंड रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक अच्छे माइक की जरूरत होती है। तो आपको मैं एक बहुत चीपेस्ट माइक दिखाता हूँ। कई टाइप के माइक आते हैं। आप एक छोटा सा माइक, ये है बोया कंपनी का, ये आता है, अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा। तो ये का माइक आप ले सकते हैं, इसके ऊपर लगाने का, इस गियर के ऊपर आप इसको फिट कर सकते हैं। और डायलॉग वगैरह बोलना है, करना है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा माइक आता है, इसको बोलते हैं कॉलर माइक। ये प्रोफेशनल माइक है, ये सस्ता भी आता है, 500 से 1000 रुपए में भी आ जाता है। तो आपने देखा होगा लोग इसको कॉलर पे लगा के रखते हैं इस तरह से। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं अगर थोड़ा भी आपको प्रोफेशनल मूवी बनाना है। तो आप कम से कम गियर में भी काफी अच्छी चीजें बना सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। Years ago, with a little camcorder, I never would have thought I would end up shooting proper footage with a phone like this, or even have an electronic stabilizer like this one. But here am I today reviewing the Xeon Smooth 4, which is their latest gimbal that can not only stabilize your shaky phone footage, but it can rather enable you to shoot cinematic footage. You have a few cool features such as focus pulling, you can zoom, and you can also create a nice dramatic vertigo effect. On the front side of the grip are different buttons, such as the record button. Switching between pan, following mode and locking mode is very easy and done quickly thanks to the switch at the front. Most gimbals require you to press a mode button a certain amount of times to change between modes, which can be confusing at times, so it's good to see Xeon simplified the mode change. The focus mode is one of the most impressive things. Usually professional cameras have that. You can manually pull focus. Most phones cannot do it, but if you use the Xeon app in connection with the gimbal, it works pretty well. So you can actually just turn this little wheel, just like a professional focus puller, and yeah, then you can change, for example, between fore and background, but it works and it's pretty cool. The other thing you can do with the same wheel by pressing the target button down here is you can switch to zoom mode, which is also useful. If you want to zoom, you can also adjust the speed depending on how fast you actually turn this little wheel. So that is pretty useful. It also depends how good the connection is. So sometimes it works better, sometimes it works less good, but I think overall it's pretty cool to have that. There is a loss of quality depending on your phone's camera. It's still pretty amazing because even if you
you zoom in and you The so-called phone go mode is probably the most useful motion feature. सर आपका ऑडियो बार बार ब्रेक हो रहा है सर. There might be some network issue. दिख रहा है अभी? हाँ जी सर, बार बार ब्रेक हो रहा था ऑडियो, वीडियो भी. नेट का इशू चल रहा है कुछ. No sir, no sir, or no audio. Sir, no audio. Video is also freezing on. Sir, is it audible? Hello? हाँ कुछ बोला क्या? हाँ जी सर, दिस ऑडियो वीडियो आ रहा है फ्रीज होके, ऑडियो नहीं आ रहा है सर. अभी आ रहा है? नहीं सर. ये बार बार अनस्टेबल हो रहा है, पता नहीं क्यों. सर आप एक बार नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लीजिए सर. अभी आपने देखा कि इसको किस तरह से, मतलब अगर आपको प्रोफेशनली शूट करना है तो आप मोबाइल से भी बहुत अच्छा मूवी बना सकते हो. वर्ल्ड में कुछ मूवी मोबाइल फोन पे भी बनी हुई है, तो आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हो. जो लोग ज़्यादा अच्छा मूवी बनाना चाहते हैं और लेंसेज से भी खेलना चाहते हैं, तो हमारे कैमरा के लिए भी है ना, काफ़ी सारे लेंसेज आते हैं. मोबाइल कैमरे पे भी लेंस फिट हो जाते हैं. मैं उसका भी आपको बता देता हूँ, जो इंटरेस्टेड हो तो वो उसको. Sir? Yeah, I think there is some network issue. फिशआई लेंस है. क्या सर साउंड आ रहा है? सर नहीं आ रहा है साउंड, और वीडियो भी रुक रुक के चल रहा है सर. इसको क्या मैं मोबाइल से कनेक्ट करूँ क्या? नेट तो आ रहा है.
Sorry all, due to net issue, there is a big problem over here. I hope it will be resolved in next 5 minutes. Sir, I have a question. Yeah, sure. सर दिस मूवी मेकिंग के लिए अगर हम यूलेंजी का जो वीडियो स्टेबलाइजर ग्रिप ट्राइपॉड आता है वो यूज करें तो? हाँ, वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो हो सकता है। सर उसमें माइक जो है वो ऊपर इनबिल्ट होता है, फ्लैश ऊपर इनबिल्ट होता है। हाँ, तो वो बेटर होगा आपके लिए। ये हम वो इक्विपमेंट्स दिखा रहे हैं जो हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास आपके नॉलेज में या इंटरनेट में और भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, पर उन सब में ये थोड़े से बेटर कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमने ये आपको दिखाया है। ओके, बिकॉज सर आई वाज आस्किंग दैट 840 इसका रेट है सर ऑनलाइन अगर मंगाते हैं तो, सो इट विल बी मींस आसान रहेगा, इसलिए पूछ रहा था मैं। बिकॉज सर एक रिक्वेस्ट है, आप जो गूगल क्लासरूम में जो एड ऑन किया गया है आप सबको, वो सिर्फ जीमेल अकाउंट के थ्रू से ही एड ऑन होगा। साइड से रेडी सर का इंस्टीट्यूट का अकाउंट है और रेडी सर का वो एड ऑन नहीं होगा, तो रेडी सर आप कोई जीमेल अकाउंट से उसमें एड ऑन कर सकते हैं। Nana will give you that link, so no issues. Okay sir, I will give you my Gmail ID. Yes, yeah, we can go with that. There is some issue with Google Classroom. They will only accept Gmail, Yahoo or Hotmail ID. Even my institute ID is also using Gmail only. It's connected to Gmail only. Okay, but in but Gmail, it's not ending with the Gmail ID. They don't accept any forwarded ID or triggering ID. Oh, okay. Then I'll text you now. My yeah. And next thing, if you have some doubt like Digant sir, तो दिगान जी आप उसको एज ए कमेंट आप डाल सकते हैं यूट्यूब ये आपका गूगल क्लासरूम के स्ट्रीम वाला पेज में, जो सबसे पहला वाला पेज है, और उसमें डालने के बाद हम लोग उसका आंसर कर देंगे। आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं कहाँ से परचेज कर रहे हैं। Probably we can also help you in purchasing a good model so that you can use it for about 5 to 10 years or like unlimited years. So you can put it on that page. Any queries or any questions, you can put it. Okay, sir. Yeah. Hello. Yeah, you are audible now. आ रहा है आवाज अभी? हाँ जी, आवाज आ रही है। आप तो ये आपने स्क्रीन डिसेबल हो गया मेरा। आदित्य, मेरा स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड है। Okay. Now you can check out. हाँ, अभी आ रहा है। Yeah. तो अभी आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया हो? You can ask ample of questions. हाँ सर, अगर हमें मूवी में मींस जैसी वर्चुअल मूवीज होती है मींस फिक्शन वाली, तो अगर वैसी मूवी शूट करनी है तो सर कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। पहले आपको काफी मूवी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, एक शॉट लिखना पड़ेगा, तो वो भी कुछ भी बना सकते हैं। तो सर उसके एडिटिंग के लिए कोई स्पेशल ऐप है सर? एडिटिंग तो हम कल बताएंगे ना, आज हम फोटोग्राफी पे बात कर रहे हैं, कल हम सिर्फ एडिटिंग की बात करेंगे। देखिए सर, मैं कुछ ऐड ऑन करता हूँ। देखिए, जो मूवी मेकिंग है उसमें क्या है, जैसे आप कह रहे थे फिक्शन, उसमें जैसे अभी जो आदित्य है उसका हो सकता है कि उसका माइंड में आए कोई कॉमिक या कोई स्पेशल इफेक्ट या कोई सुपर क्या साइंस फिक्शन, ऐसा हो सकता है। तो ये इफेक्ट्स करने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे एडवांस चीजें लग जाती हैं। जैसे आपने जब घर के अंदर आपके दीवारों में एनहांस करने के लिए आप फ्रेम लगाते हो, उसी तरीके से वीडियो को एनहांस करने के लिए छोटे छोटे प्लगइन्स आते हैं, तो उससे आप इजीली बना सकते हो। कल हम वो सीखेंगे। आज हम सीख रहे हैं सिंपल सा एक मूवी कैसे बन जाएगा, क्योंकि अगर सिंपल सा बन जाएगा तो हम इजीली उसमें कोई भी चीज ऐड ऑन करके, कोई भी चीज पुशअप करके मूवी को
इंटैक्टफुल बना सकते हैं, एंगेजिंग बना सकते हैं। क्योंकि देखिए मूवी हम अपने लिए नहीं बनाते, मूवी बनाते हैं कि आप मूवी बना रहे हो, ओके लेट पीपल कम एंड सी इट। आप लोग आएंगे देखेंगे तभी इंस्टीट्यूट का नाम होगा, इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन बढ़ेगा, इंस्टीट्यूट में लोग आएंगे। बिकॉज जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च प्रमोट होगा। आप कुछ नया आइडिया सोच रहे हो, यू वांट टू टेल योर स्टोरी, you want to you have created some stories, or you might be creating some short movies to promote your concept ideas or creative ideas, so this will help you out. Over to Yatish Jain. अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल गिम्बल का और दिखाता हूँ, क्योंकि अभी आपकी जो स्टेज है, अभी आपको पहले तो शूट अच्छा करना है। अच्छा शूट के लिए आप अच्छा देखोगे, स्टोरी क्रिएट करोगे, तब होगा। एक और वीडियो मैं दिखाता हूँ, उसमें कितने अच्छे एंगल दिखाए गए। This is Zdenka. Last few days I've spent crazy amount of time in front of the computer editing wedding photos and videos and all that, and I've said enough. I grabbed my phone and a gimbal and I headed here where I'm shooting a cinematic video sequence which you saw at the beginning of the video, and I'm taking you with me. I'm gonna be showing you step by step how I'm creating the video, why I'm making the choices I'm making. Also, I'll show you how I am editing the final result, so you will get the whole thing. It is a beginner-friendly video, so you can apply those tips to any kind of smartphone, any kind of camera. You can use the gimbal, you don't have to use the gimbal. But today I'm gonna be using this. I'm gonna be using Samsung Galaxy S10 Plus because it has beautiful multiple lenses here, and I'm gonna be using DJI Osmo Mobile 3 gimbal. The two apps I'm gonna be using is just a regular camera app in the phone, and also DJI Mimo, which came with the gimbal. I also have Filmic Pro app installed on the phone, but I'm not gonna use it today because it is a beginner-friendly video, and I would like everybody be able to apply those tips. If you are new here, my name is Zdenka Darola. I make photo and video tutorials, creative camera challenges, and tech reviews. So if that's something you're Now I changed the app to the DJI Mimo because I want to take advantage of two features here. The next shot I'm going to be doing is just panning from left to the right, so clockwise, and at the end I'm going to do whip, ending it up with green background of the leaves. Now I'm gonna be using the gimbal in a sports mode because that allows me to do a steady move like this and then quick whip at the end. Also, I will take advantage of being able to lock the exposure here. So when I tap on the screen right here and hold it for a little bit, the little lock will show. That means that the video is not gonna go suddenly bright and dark. It's gonna stay at the same level. The next few clips will be just detail shots of the plants, detail shots of the fall colors. So here I found these colorful leaves, and I'm gonna continue the whip transition I did with the previous shot. So I'm just gonna whip on that and stay a little bit on the fall leaves. Now the settings are the same app as the previous shot. As I'm shooting the next few clips, just close-ups of different plants to show the fall season, I switched the app to the regular camera app.
Now I have a lot of close-up shots of different plants. Next shot I want to do is kind of a big shot. So of me standing there at the end of the runway. I have the gimbal here on a tripod sitting on the ground, and I'm using just a regular camera app because first shot will be with a telephoto lens just of me sitting there close up. The second shot will be wide angle lens. Now my plan is transition out from this location. So what I'm gonna do, still have the camera app. Now I have standard lens though and regular speed 24 frames per second. I'm gonna still show the lake one more time, but then I'm gonna transition. So I'm gonna go down and kind of black out, kind of go dark into the ground. Let me show you. As I'm in the woods, I'm gonna continue with the transition, so I will have my phone facing down and just bring it up to reveal the place. I'm gonna use a little stamp as kind of my background, the wooden background, so I'm gonna start like that and I'm gonna bring it up. I'm using the DJI Mimo app right now because I'm worried about light changing, so I'm gonna lock the exposure, and it's just regular speed, 24 frames per second. Now I switched to regular camera app because I will be shooting with a wide angle as I'm just walking through the woods. I'm gonna switch it again to standard lens and telephoto as well to give it different look. I might mix it in a post. And as I'm here in the woods, I'll do again the close-ups of different plants. And the last shot here, just one last look of me at the lake and walk away. So for that I am going to be using regular lens, so just a camera app, 24 frames per second, there is no slow motion, and yeah, just sort of walk away. Now that we have all the shots, let's go to the studio, edit the whole piece. ये मूवी तो इन्होंने गिम्बल से शूट की है, पर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मूवी दिखाता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम DSLR में, काफ़ी पुरानी मूवी है, विदाउट किसी गियर के शूट की है, सिंपल पार्क में। तो आप भी अभी इस तरह की बना सकते हो। तो ये मेरी फर्स्ट मूवी थी। आप सोच रहे होंगे मैंने इतने सारे आपको गैजेट दिखा दिए, गिम्बल दिखा दिया, लेंसेज दिखा दिए, पर ये जो मैंने लास्ट मूवी आपको दिखाई है इसमें मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। सिंपल कैमरा है, DSLR कैमरा, और एक मोनोपॉड है जिसमें मैंने उसको रखा हो। नहीं, ये हाथ से भी बना सकते हो आप, पर अगर आप कुछ स्टैंड या मोबाइल से बना रहे हो तो सेल्फी स्टिक वगैरह ले लेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। आप कम से कम सामान में भी बहुत अच्छी मूवी बना सकते हो, तो इसलिए मैंने आपको ये मूवी दिखाई है। तो आज आप कोशिश करो या कल सुबह उठ के, जैसे मैंने आपको मिनिमम चीज़ों में भी बनाना सिखाया है, आप पार्क में जाके डिफरेंट एंगल शॉट ले सकते हो।
या कोई स्टोरी क्रिएट करना चाह रहा है तो घर में कर सकता है। जैसे आपके पास लैपटॉप है या कुछ है, आप काम करते हुए उसके ऊपर उंगलियां चल रही हैं, आप कुछ काम कर रहे हो, लिख रहे हो, तो पेन का शॉट हुआ, लॉन्ग शॉट हुआ, आप सोच रहे हो, इस तरह से कुछ भी छोटा सा कम से कम 10-15 शॉट का मूवी अभी आप बना सकते हो, जो कि आप कल एडिट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है कि आप स्टोरी क्रिएट करो छोटा सा और शॉर्ट्स बनाओ। आदित्य सर। हाँ जी सर। आगे आप। So class, now how are you feeling? कुछ एक्स्ट्रा सीखा या पहले से आता? You can unmute yourself. किसी का कोई क्वेश्चन हो? एक्स्ट्रा गिम्बल्स और गियर्स के बारे में सीखा है सर। Okay, great news. Ready sir? और सर जो 12 डिफरेंट एंगल्स बताए, मींस मैंने जो अभी तक 2 मूवी शूट की थी वो मींस सिंपल एंगल्स की थी। I knew, but some more information I got it from there. It's good. Sir? And I came to know about various shots. So I learned about the 12 different angles. Okay, great news. Okay, so as EcoSkill Arts is related to SDGs, that is Sustainability Goal Development Goals. So there is UN 75 survey published in your Google Classroom. I request you all to go through that survey and please fill that survey. It is beneficial for our future. And also we actually follow one SDGs, that is any चश्मा कहाँ है? 3 or 4, any number of SDGs. So now we are following goal number 17, that is community builder. Okay, so can I stop screen sharing, Mr. Yatish? Yeah, thank you so much. So before moving forward, I would like to ask you something. Have you ever purchased a camera or purchased a, I mean to say, for example, a tripod or gimbal-like thing? Have you ever purchased? Yes, sir. I have purchased the collar mic. Okay, you have purchased collar mic. That's very good. So I will give you a small things, ideas. You can use your household waste to create all these things. As we belong to SDGs, we belong to Sustainable Development Goals, and we use sustainability as our future product and product development. So I will be teaching you, I will be just telling you how to use simple techniques to cut short and fix your budget so that you can do more valuable things. For example, you have a microphone. In a microphone, you have 2 earphones. Sometimes that earphone doesn't work, so you throw that microphone. I request you all, don't throw away that microphone. Just cut the earpiece and reuse it. The microphone part will again work. The microphone life is much more longer than an earphone. So microphone, you don't have to throw that away, whole thing. You just cut it out and use that microphone as your collar mic. I can show another thing. Everybody knows okay, we have to make a stabilizer, we have to purchase a stabilizer. I have made a simple technique to build up a stabilizer, image stabilizer, not camera image stabilizer, but it will support camera to reduce shaking about 90% or 95%. I can show you something.
This is a book. I am an illustrator, so this is a book of illustration. These are foams you might be getting in your household. These foams. This is actually a Dell part came into my house. I have kept that foam and not dropped it in the dustbin. This is another foam you will get in shirt packaging and pant packaging. Probably it's a shirt. It's a long one. You just fold it, keep it on top of this. Okay. Is it visible? Is it visible? Yes, sir. Yeah. Now this is my book. Keep it all over. Kept it all over. Now here I will keep my camera. Here. This is also applicable in case of DSLR. Heavy camera, I will keep it over here. Now, after that, it will not move. After that, when I used to carry this, a little bit of shake it will carry because this is a sponge. It will act as a grip, and this will help you out in making an image stable movies. I will show you another thing. Have you ever seen this clip that's for tugging up your cloth for sun drying? Hello? आदित्य, मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी सर, हाँ जी। सभी लोग अभी सबसे पहले एक स्टोरी बोर्ड बनाए, छोटा सा ही, मतलब 10-15 शॉट लेने, जिसको कम से कम बनाए, छोटा सा भी मोबाइल है। होमवर्क जरूर करें और डिफरेंट एंगल से, जैसे आप ज्यादा कुछ नहीं करना तो आप अपने लैपटॉप पे या किसी उस पे बैठ के काम कर रहे हो तो उसी के कम से कम 10 एंगल ढूंढें कि एक ही चीज को, जैसे आप बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपकी मम्मी काम कर रही है, कुछ भी घर में ही हो आप, तो उसी सीन को मल्टीपल एंगल से कैसे शूट करोगे, ये एक्सरसाइज सबको करनी है। जैसे वो हाथ से कोई काम करे तो हाथ का एक क्लोजअप होगा, थोड़ा सा मिड शॉट होगा, फिर लॉन्ग शॉट होगा, थोड़ा सा ऊपर से ले लो, थोड़ा नीचे से एंगल कर, तो आपको मैक्सिमम मल्टीपल शॉट की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाकर कोई भी चीज जब देखोगे तो आपको मल्टीपल एंगल अपने आप दिखाई देंगे। ठीक है आदित्य सर, मैंने आपको एक मैसेज भेजा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये करें तो कल हम एडिट करेंगे। अगर किसी के अच्छे शॉट्स हैं तो आदित्य सर को भेज दें, वो मुझे भेज देंगे, तो मैं हो सकता है उसी पे एडिटिंग दिखाऊं। अगर कोई अच्छी तरह से होमवर्क करता नहीं तो फिर मैं अपने वीडियोस पे दिखाऊंगा। Sir, we will have to do editing also. यस, कल हम एडिटिंग करेंगे। आज फोटोग्राफी था, कल हमारा एडिटिंग है। ये कंप्लीट कोर्स है मूवी मेकिंग का। एक्चुअली क्या है कि our flagship program is industrial training. So in this December or January, whenever we get licensed to go flagship program from IP University and also from other universities, those who are conducting vocational studies, so anybody can join that program. There's no bar, no age bar, no casteism, no nothing. It's open to all. And in that program, we will study about movie making in detail. It's a 2 weeks course, continuous course, 2 weeks, 2 hours every day. So it was a marvelous course, and fees is also not much. That I will not disclose it over here. It will be disclosed on our website, ecoskillarts.com. Sir, I have messaged you and replied you your message. Sir is not there. Okay, चलो चलेगा. Okay. तो मैं क्या कह रहा था, आपके पास कपड़े का क्लिप होगा ना, कपड़े का क्लिप, कपड़े का क्लिप के ऊपर 2 छोटे-छोटे रबर बैंड ले लेना, और रबर बैंड से, जैसे ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन मेरे पास माइक्रोफोन एक्चुअली है नहीं, मैं कॉलर माइक यूज करता हूँ, बट जैसे इसको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो तार है, तार में ऐसे लगे होते हैं, माइक्रोफोन ऐसे लगे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे लगे होते हैं।
इसको आप कुछ नहीं, नीचे फेविक्विक या कुछ से वो माइक्रोफोन के सीधे वाले हिस्से में मत लगाना, उल्टे वाले हिस्से में जहां पर छेद नहीं होता वहां पर आप इसको चिपका देना, क्लिप को, कपड़े का क्लिप को। फिर वो क्लिप आप अपने शर्ट में कहीं पे भी लगा सकते हो। जो टेलीफोन के माइक्रोफोन होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, तो वो आपके, अगर आपके बॉडी के यहाँ पर भी आपने माइक्रोफोन लगा दिया विच इज नॉट इन व्यूअर्स एंगल और इसके नीचे लगा दिया, व्यूअर्स पॉइंट में नहीं आता है, तो भी आपको वो दिखाई नहीं देगा और वो काफी इफेक्टिव होता है, आपका वॉइस पूरा आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात है, जैसे ये साउंड फिल्टर बोलते हैं इसको, फिल्टर ऊपर से गोल सा एक देख सकते हैं, इसको फिल्टर बोलते हैं। ये ऑडियो फिल्टर बोलते हैं इसको, या एयर कर्टन बोलते हैं, जो गोल सा होता है ना, मूवी में देखा होगा गोल सा होता है, गाते हैं, उसको एयर कर्टन बोलते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आपके पास कपड़ा है ना, कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, थोड़ा सा रुई लेना, माइक्रोफोन के ऊपर रखना और चारों तरफ ना कॉटन का कपड़ा लेना। अगर माइक्रोफोन से आवाज नहीं आ रही है तो सिर्फ रुई का एक पतला सा लेयर उसके चारों तरफ लगा दें, सिंपल सा आपका एयर कर्टन बन जाएगा, आपको परचेस करने का जरूरत नहीं। ये छोटे छोटे बड़े अच्छे ट्रिक्स हैं, इससे बड़े अच्छे काम होते हैं, तो आपका पैसे ही बच जाएंगे और आपका काम भी बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। कुछ और चीज बताते हैं, कैमरा में मोबाइल यूज करते हैं आप सब, तो चलते हैं एक वीडियो देखते हैं। अभी इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, आप सबने देखा होगा उसको। एक सेकेंड, मैं इसका वीडियो से पहले, आजकल बहुत लंबा सा 5 मिनट का 5 सेकेंड का ऐड आता है, तो मैं उसको थोड़ा सा दफा दफा करता हूँ और फिर आपको अभी दिखाते हैं वीडियो। ये स्क्रीन विजिबल है? यस सर। मैं थोड़ा सा साउंड दे रहा हूँ, आप बता दीजिएगा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आवाज आई? ऑडिबल? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। देखते हैं इसको छोटे छोटे करके, पहले 2 बार देखेंगे आप, एक बार टुकड़े टुकड़े में देखेंगे, एक बार पूरा देखेंगे। आप एनोटेशन मत कीजिएगा स्क्रीन में। अभी हम इतना ही देखते हैं पहले। इसमें क्या है कि ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का 2011 का वर्ल्ड कप है, इसका एक थीम सॉन्ग है और इसको चलाना है, और चलाने के लिए किसी को अपग्रेड करना है, इंडिया का परफॉर्मेंस दिखाना है। तो यही आपके नॉर्मल जो वीडियोस हैं और नॉर्मल जो तरीके हैं उसमें है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ पर इंडिया का मैप तैयार हो रहा है। ये जो इंडिया का मैप तैयार हो रहा है कुछ नहीं है, मैप पूरा बना दिया था, पर बाद में मास्किंग को हटाते लगे, जितना एरिया मास्किंग को हटाने लगे ये मैप बनती रही। लास्ट में ये जो छोटे से डॉट दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं है, छोटा सा प्लगइन आता है स्टार फिल्टर। आपको लगेगा कितना बड़ा काम है, कुछ नहीं काम है, 5 सेकंड का भी काम नहीं है। ये स्टार फिल्टर लेते हैं और नीचे लगा देते हैं, हो गया। और ये जो चीज बनाया हुआ है कुछ नहीं है, ये ऊपर का एक लेयर है, नीचे का 2 लेयर है और ये बीच का 1 लेयर है। तो ये 3 लेयर का काम है और कुछ नहीं है इसमें। और ये इजीली, अब देखिए यतीश सर ने जो बोला था कि एक डिटेल शॉट, तो दिस इज अ डिटेल शॉट ऑफ सौरव गांगुली। ये डिटेल शॉट है, पीछे का ब्लर है। अब पीछे का ब्लर क्यों है? आप बोलोगे कि पीछे का ब्लर ना भी तो हो सकता था, पीछे का भी डिटेल दिखाना है, पर यहाँ पर नहीं है, बिकॉज सौरव गांगुली का एक डिटेल शॉट है। अब डिटेल शॉट में हमें गांगुली दिखाना है, पीछे का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, अपर्चर को हमने 1.4 में रख दिया
और उसके बाद शूट किया तो एकदम ब्लर हो गया पीछे और गांगुली एकदम फीचर में आ गया। देखिए अब जब शॉट्स होंगे, एक शॉट जैसे ये है, ये शॉट को पहले इन्होंने प्लान किया कि ओके सेंटर शॉट होगा, डिटेल शॉट होगा, शुरू करते हैं शॉट चलती रहेगी, यहाँ पर शॉट खत्म, दूसरी शॉट। तो ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड का होते होते गाने में खत्म। क्योंकि हमें जब ये करना होगा तो हमें गाने के बीट के साथ साथ करना होगा। देखिए ये वाहे वाहे बोल के इन्होंने एक बीट खत्म किया, अब दूसरा सेंटेंस जब शुरू होगा सीन चेंज होगा। जैसे जैसे होने लगा है वो सीन चेंज होते रहता है। ये जो चीज दिखा है आपने, ये एक्चुअली क्या है, विकेट के पीछे ऊपर एक वीडियो कैमरा होता है, ये उसका शॉट है और वो शॉट एकदम बहुत मार्वेलस शॉट है जो हम एक बार 11 शॉट्स में से एक शॉट देख रहे थे, नीचे से शॉट लेना तो एक सराउंड का एक साउंड आता है, एक सराउंड का फीलिंग आता है, वही चीज है। एक बार दोबारा देखते हैं, ये देखिए ये ऑसम लगता है। इज ऑल अबाउट क्रिकेट। तो क्रिकेट का जो बैट का स्ट्रोक्स है यही हम देख के लगाते हैं, ये क्रिकेट है क्रिकेट है क्रिकेट है। तो फॉर दैट ये ना बॉलिंग को इतना प्रेसिशन नहीं दिया, और बॉलिंग को प्रेसिशन कब दिया, जब बीट्स हेवी बीट्स हैं उस टाइम बॉलिंग को थ्रो किया। उसके बाद जब ये सेंटेंस में जब बीट्स के थ्रू से चल रहा है, जो फ्रेजेस चल रहे हैं उसमें इन्होंने बैट्स बनाए, ये देखिए। और जब हम वीडियो शूट करते हैं थोड़ा अलग से शूट ढूंढते हैं, जैसे कि घिस के रनवे में पहुंच गया, घिस के बॉल को पकड़ा, घिस के छक्का मारा, ये सब अजीब से शॉट्स हैं, ये इंटरेस्टिंग हो गए। चलिए ये तो हो गया। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो आपको सिनेमा में कैसे करके आप वीडियोग्राफी होता है, और आमिर खान एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देता है किस एंगल में होना चाहिए और उस पर बहुत अच्छा पड़ता है। तो ये एक गाना आप सबने सुना होगा, ये मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ स्क्रीन, इसको देख लेते हैं। ये देखिए डिटेलिंग शॉट, दे आर टॉकिंग अबाउट ईशान, और ईशान अवस्थी का जो डिटेल शॉट है जिसमें उसका फेस एकदम क्लियर है, बाल का जरूरत नहीं है, डिटेल शॉट है, ये एकदम सुपर क्लोज शॉट है। इसके बाद शॉट चेंज हो गया, शॉट चेंज होके अभी वाइड स्क्रीन में आ गया, पर ये वाइड स्क्रीन नहीं है, ये है मीडियम शॉट, क्योंकि ये कमर तक आ रहा है, काउबॉय शॉट भी नहीं है, नहीं तो नी तक आता। एक एक करके आप सब एक काम करना, वीडियोस देखना, यूट्यूब के वीडियोस देखना, अलग अलग गाने सुनना, और इस बार मूवी वीडियो क्लिप्स कुछ भी चीज अलग अलग दिशा से आप सोचने की कोशिश करना। आप ये सोचना कि वो कैप्चर कैसे किया है, और पॉज करके देखना, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो आप कितना बार पॉज करो कितने बार भी चला दो। देख लेते हैं इसमें क्या बोलते हैं। और ये वाइड एंगल शूट है, ये क्या दिखाया, वो पेंट कर रहा है, बहुत डिटेल था। उसके बाद क्या दिखाया, एक मीडियम शॉट कि उसमें थोड़े से कलर लगे हुए हैं, आमिर खान खुश है कि कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है, और वो बच्चा बैठकर ड्राइंग कर रहा था, उसका बैक शॉट था। पर उसके बाद दिखाया पूरा कॉलेज ही या पूरा स्कूल, पूरा इंस्टीट्यूट उस काम में लगा हुआ है। अब देखिए इंटरेस्टिंग कितना बन गया, ये देखिए। अभी वापस डिटेल शॉट में आ गया, तो इनका जो डिटेल शॉट है ये इनका मेजर फंडामेंटल बन गया। जो सर कह रहे थे कि ऑडियो मतलब ज्यादा शॉट्स को मिक्सअप इंटरनल एंगल नहीं करना, थोड़े थोड़े शॉट्स रखना। तो डिटेल शॉट इनका डिटेल्स मतलब वो ज्यादा शो किया। देखिए ये भी एक डिटेल शॉट है, ये भी एक डिटेल शॉट है, ये भी एक डिटेल शॉट है। अब अगर आप स्टॉप वॉच रख के कैलकुलेट करते हैं तो देखिए
कितना 1 2 1 2 1 2 2 2 सेकंड का एक शॉट है। इसको बोलते हैं डिटेल्ड ड्रैग। हम नीचे से लेके ऊपर तक ड्रैग करते हैं, इसको स्लाइडर से ड्रैग करते हैं ना। ये एक रॉड के ऊपर ऐसे लगा होता है कैमरा और ऐसे करके ड्रैग होता है। तो ऐसे करके ड्रैग होने से आपका नीचे से ऊपर तक ये पूरा ड्रैग होगी, कभी कभी ऊपर से नीचे भी जाता है। डिटेल शॉट, डिटेल शॉट, डिटेल शॉट, सारे डिटेल शॉट है। देखिए देखिए एक बात तो है कि 2-3 सेकंड का होता है, पर कभी कभी एक स्टोरी क्रिएट करना होता है। तो इन्होंने यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट किया है। यहाँ पर जो गाल का तेल है वो गलत जगह है, तो ये क्या करेगा, चेंज करेगा। मौसम का है मेहमान ओ दुनिया सजी। ये डिटेल शॉट में आ गए और ये स्टोरी बन गया। इतने में इसका पूरा स्टोरी बन गया, इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इतने में स्टोरी बन गया। ऐसा करके मूवी पे छोटे छोटे स्टोरीज बनते हैं और गाने में ही स्टोरीज बोलते हैं। अगर आप में से बहुत अच्छा कोई पोएट्री करते हैं आता है, ऑडियंस मतलब ऑडिटर हैं या बहुत अच्छा कुछ बोलते हैं, तो आप अपने बोल के अपने कॉन्सेप्ट को भी समझा सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी बोल सकते हैं, अपने क्रिएटिव आइडियाज भी डिपिक्ट कर सकते हैं। ये है डिटेल शॉट। डिटेल शॉट पूरा डिटेल शॉट चल रहा है, इसमें और कोई सही है। These are expressions। जब आप वीडियो कैप्चर करोगे, घर में शादी हो रही है या इंस्टीट्यूशन में कुछ फंक्शंस हो रहे हैं और देयर इज सम लाफिंग सेरेमनी और crying ceremony or something, these emotions will help you to generate your shot impressive, make your shot impressive। ये खुल के आता है शॉट। देखिए देखिए कितना इम्पैक्ट आता है, कितना पावरफुल लगता है ये शॉट। और उसके बाद डिटेल शॉट। तो एक्सप्रेशन जो है, इमोशंस जो है, ये बहुत जरूरी है। अब गए, अब तो बात भी नहीं कर रहे थे। ये क्या बना रहे आप? ये मेरे पता है, और ये केला। These are small dialogues, इसको बोलते हैं इंसेट। इसमें ऑडियो इंसर्ट भी हो सकता है, वीडियो इंसर्ट भी हो सकता है। ये ऑडियो वीडियो इंसर्ट। आसी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी करूं मगर सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है पता। ये गाना आप बाद में सुन लेना, मेरे को इतना ही बोलना था इसलिए मैंने ये गाना चलाया था। और आमिर खान के मूवीज में आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि कैसे करके वीडियो पिक्चराइजेशन क्या है। आमिर खान के अलावा भी जैसे लेटेस्ट मूवीज आए हैं, जैसे किक हुआ या टाइगर जिंदा है, उससे भी लेटेस्ट आ जाइए। ये सब सिनेमेटोग्राफर्स को आ गया है। और अच्छे अच्छे मूवीज में जैसे मुन्ना भाई MBBS, मेरा ही क्लासमेट ने उसका एडिटिंग किया है। तो वो उनका मतलब उस टाइम वो जस्ट ज्वाइन किया था तो हेल्पिंग ग्रुप में था। तो these are the things which creates beauty in every movie, every cinema, every video clips, every documentary। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज की बात करें तो डॉक्यूमेंट्रीज की बात में सत्यजीत रे का नाम बहुत फेमस है। एंड आई हैट्स ऑफ टू दैट फेलो। उसने इतना कुछ किया है और वी आर देयर जस्ट following his steps। So I request you all to go through Satyajit Ray. He is one of the universal artists in India, and India feel proud to announce his name in this live
course like that. Any questions to be answered? Yeah, anything to be answered? Sir, Yeah, is there any tip to do high shot? high shot. High shot means from top, from aerial. Yes. Yeah. Yes, sir. Yeah, I think there are movies. In movies, you can see that high shot, because high shot actually कुछ नहीं है, 4 shots होते हैं. 4 shot क्यों होते हैं? पार्किंग एरिया में जाना है, कुछ क्रिकेट हो रहा है, कोई फुटबॉल हो रहा है, या कोई एक्शन कर रहा है, ऊपर से वो आएगा. फॉर एग्जांपल ओ माय गॉड देखना. ओ माय गॉड में जब बाइक को ऊपर से नीचे लेके आएगा तो वो हाई शॉट होता है. ठीक है. आप आज के बाद जो भी मूवीज देखोगे ना, आप इस एंगल से देखना ये कौन सा शॉट है, और एक डायरी में शॉर्ट्स को लिख देना. यू विल नेवर गेट कंफ्यूज. हमारा तो रोज का काम है, और मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो सर को इसलिए पूछे थे क्योंकि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड शॉर्ट्स, एंड मेंटेनिंग ग्रेड थ्रू शॉर्ट इज मार्वेलस. और जिसने कर लिया वो फिर चमक गया. कल हम वापस 4 बजे मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. नमस्ते. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Please Thank add you. my Gmail ID. Okay, sir. So I have already added it, sir. Okay, okay. Thank you. Thanks a lot. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you. And thank you all the crew members of EcoSkill Arts. Nana, Fareem. They helped me a lot to get these things done. So thank you all. Thank you, sir.